Hello friends, welcome back to my channel Escape with Manan. In my last video, I have showed you the road trip from Hyderabad to Chikkamagaluru, the route we took and the kind of food we ate during that road trip. And also, I have showed you some of the road conditions leading to Ballari and from there on to Chikkamagaluru. And finally, we ended the day by checking into the hotel, Sea and Wind Store. So if you haven't got a chance to watch my video, I will put that link in the description. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all? अभी हम लोग check out किए हैं Sea and Windsor होटल से because like I always do, I don't plan my hotels. On the way जो भी मिलता है वो ले लेता हूँ. ओके तो हम लोग जा रहे हैं मुलियांगिरी पीक और वहीं पर भी थोड़ा बाबा बुडान पीक ऐसे सब कुछ है. होटल के हिसाब से ठीक ठाक था होटल. वी जस्ट स्टेड देयर फॉर द नाइट एंड वी हैड सम गुड ब्रेकफास्ट. आई मीन खास बड़ा स्प्रेड था नहीं ब्रेकफास्ट का, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है. इडली डोसा बड़ा टाइप था, टिपिकल साउथ इंडियन स्प्रेड विद सम ब्रेड जैम्स वगैरह. ऑलराइट, तो आज का प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि विल नो टिपिकल जो व्यू पॉइंट्स है यहाँ के, लाइक मुलियांगिरी पीक, एलिफेंट हिल्स व्यू पॉइंट, बाबा बुडान व्यू पॉइंट, ऐसे कुछ व्यू पॉइंट्स देखने का इरादा है आज. एंड इफ टाइम परमिट्स वी विल ट्राई एंड सी इफ वी कैन विजिट सम वाटरफॉल्स एज वेल, बट आई डोंट नो कितना फ्लो होगा वाटरफॉल का. देखते हैं एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. There's too much of traffic jam here. Someone of a passerby said that you have to book tickets online and then go in. So, you know what I'll do? I'll still double check if I can go in and let's see what they say. Alright guys, इन लोगों ने बोला कि there are 2 slots to book your Mulayangiri Peak tickets online. यहाँ पे सिग्नल थोड़ा वीक है. I'm still trying on my mobile phone as you can see. 100 रुपये का है चार्ज फॉर द कार एंड वी जस्ट हैव टू एंटर द कार डिटेल, तो फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, एंड देन फ़ोन पे यूपीआई नेट बैंकिंग किसी से भी आप पे कर सकते हो. एंड लकीली हमारा नेटवर्क काम कर चुका था एंड आई हैड टू मेक द पेमेंट ऑनलाइन बुकिंग देन एंड देयर, सो इट वर्कड आउट फॉर मी. मगर आप लोग ना एक दिन पहले बुक कर लीजिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड. जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं मुलियांगिरी हिल्स और बाबा बुडांगिरी हिल्स के तरफ, हम लोगों को ये ब्यूटीफुल सीनरी ने वेलकम किया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल सीनरी हम लोगों को बहुत ही अच्छा सा क्लाउड्स का नज़ारा भी दिखा. एंड द क्लाउड्स बहुत ही मिस्टी, बहुत ही ब्यूटीफुल. आई मीन इन पर्सन आप देखोगे ना, उसका अलग ही मज़ा है. I am here in the Mullayangiri Hills and we are on the way to the Elephant Hill viewpoint. But as you can see, this is a snapshot of the hilly terrain that we can see. It's so nice. It's so amazing actually. Look at those clouds passing through and hitting the hills. And these clouds are actually hitting my face as well. This place is so amazing. You need to visit this once. So amazing. You can see the clouds above our head. Yeah, and you can also see the greenery around me. The roads leading to Baba Budangiri Hills were largely good except for some rough patches here and there. But you will definitely enjoy the scenic drive towards the hills. On the way, we also found this waterfall, which is called as Honnamanna Hala Waterfalls, just beside the road. Not a huge natural kind of a waterfall, but looks like a man-made waterfall just to attract some visitors. There's also a temple on the top, so those interested can easily spend some time, visiting this place as well.
व्यू पॉइंट जाने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर और था, लेकिन रोड बहुत ही ख़राब था। आई डिडंट वांट टू टेक द रिस्क ऑन माय पोलो, सो हम लोगों ने यहाँ पर लोकल कैब जीप टाइप लिए हैं जो कि 150 रुपीज़ पर हेड था, विच विल टेक यू टू दैट व्यू पॉइंट। जीप ने हमें व्यू पॉइंट पे छोड़ दिया है। व्यू पॉइंट पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोकल शॉप्स थे, तो बच्चों ने खाया मैगी एंड हमने लिया है गरम गरम चाय इन दैट चिली वेदर। We had a lot of other options as well, like a lot of fresh cut fruits, कायरी, pineapple, apple, watermelon, ऐसे जो चाहे आप ले सकते हैं, और freshly squeezed juice as well was also available. यहाँ पर हम लोग देखने गए हैं पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड एज मानिक्यधारा वाटरफॉल्स। तकरीबन 150 to 200 यहाँ मान लो 300 स्टेप्स डाउन थे, एंड वंस यू गो डाउन देयर यू विल सी द वाटरफॉल्स फ्लोइंग, बट उतना फ्लो था नहीं पाने का। आई कुड सी लिटिल वाटरफॉल एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर नहा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था, आई कुड सेंस द वाटर ऑलरेडी बीइंग वेरी कोल्ड। लेकिन वाटरफॉल इटसेल्फ इज़ नॉट सो ह्यूज, सो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे को हुआ ज़रूर कि फ्लो इतना बहुत कम है करके। The place although was super awesome, मतलब you were on the top of the hill watching the entire surrounding landscape from a height. Hello guys, this is Elephant Hill View Point. ये कभी कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी कभी धूप आ रही है, और इधर एलिफेंट दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा, शायद पूरा क्लाउडी है। बाद में दिखाता हूँ। जब मैं ऊपर चढ़ रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत गड़े गड़े थे बीच में। सो अच्छा है प्लेस, लेकिन बहुत क्लाउडी नहीं है तो अच्छा दिखेगा। बादल हटने के बाद हमें दिखाई दिया असली एलिफेंट हिल शेप्ड माउंटेन। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दिस इज व्हाट द एलिफेंट शेप लुक्स लाइक। दिस इज द रीजन व्हाई दिस प्लेस हैज बीन कॉल्ड एज एलिफेंट हिल। On our return to the car parking area, we found this beautiful place called as Shooting Point, और कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे shootings होते हैं। Alright, after spending great amount of time in the Elephant Hill Peak, we are now going to our next destination, which is yet another peak in Karnataka, which is called as the Mullayangiri Hills Peak. On our way to the Mulayangiri Peak, we found this zip line, और obviously Ayan और Rehan super excited हो चुके हैं already to do this zip line activity. तो यहाँ पर per person cost है 300 rupees for kids. After the zipline activity, we have resumed our journey to the Mulayangiri Peak, and needless to say, the drive was crazy, super, and awesomely scenic.
पहाड़ों की तो यही खास बात होती है कि मौसम अचानक से बदल जाता है। लाइक हम लोग जब 12 बजे पहुंचे थे बाबा बुडांगिरी पीक पे, एकदम सा क्लाउडी सा मौसम था, न्यूज़ मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग जब मुलयांगिरी की तरफ जा रहे थे तो हमें जो भी मौका मिला टू कैप्चर ड्यूरिंग द नॉन क्लाउडी टाइम फ्रेम, we stopped the car and captured that beauty in our cameras. Okay, this is Mulayangiri Peak, Karnataka's highest peak point, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़े ग्रीनरी में कवर किए हुए हैं। बट विंड इतना है, आप देख सकते हैं विंड स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा है, मेरा विंड स्क्रीन भी इतनी हवा आ रही है। देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर पूरा आपको घाट्स दिखेगा और वहाँ पर उस तरफ पूरा आपको सिटी दिखेगा। You will never be able to know कि कब बादल आ जाए और अचानक से कब चेंज हो जाए मौसम, in a cloudy environment. So whenever you have an opportunity, please capture those moments. Right at the summit of this Mullayangiri Peak, there is a temple dedicated to Mullappa Swami, and a lot of pilgrims go on to that summit to visit that temple. It has a great significance in this area. And I personally came here on the top. My family gave up because it was too much wind, too much chilly as well. मतलब उन लोगों को ठंड लग रही थी, and they didn't have that energy to climb on top of this summit. It's good half-kilometer trek, I would say. There are although very nicely created steps for us to reach to that summit. लेकिन उन लोगों के पास इतना थी नहीं जाने की, लेकिन I wanted to capture this moment, so I came here to the summit, and that's the G point that you can see over there. And वहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ना था, and a lot of people actually gave up because of this windy condition. It was already 6 o'clock in the evening and it's the closing time, so we descended back to that car parking area where we got picked up. यहाँ पर हम लोग खुद की गाड़ी में आ नहीं सकते because there's a union taxi. We have to take those taxis. After spending some great time in Mullayangiri Peak, in the return we found this lake called Hirekolale Lake, and we captured some snippets of the lake here. It was already late, but we wanted to stop over here just to see this lake. Okay, day 2, the second night in Chikkamagaluru. We are in Olive by Embassy Group, and this is how the common area looks like. Lounge and some seating area here. Alright, this is the first room. My kids have taken this room. Alright, they're already having some fun. From room 1 we're going to room 2. So this is room 2. Similar kind of a setup. After a good night's sleep, we had a good breakfast in town canteen. This was one of the famous spots. And after that, we went to the city center to take a look at some coffee shops. And unfortunately, we didn't have a coffee tour because of the festival holidays. A lot of those establishments were closed, and unfortunately, we didn't have any tour. In my next vlog, I'll take you to Gokarna and the majestic Jog Falls. If you like my content, please do like, share, and subscribe to my channel. Until then, keep exploring.